हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिवबोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आज आप लोगों के साथ हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं शिवा राम सर, जो कि एक एक्स बैंकर हैं, साथ ही साथ आईआईबीएफ के एक्स एग्जामिनेशन सेल के मेंबर भी रह चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजों को। अगर हम बात करते हैं शिवा सर की, तो शिवा सर ऑलरेडी हमारे ऑलिव बोर्ड के जेआईबी की सीआईबी के मेंटोर है। इनकी ही मेंटोरशिप में हम और आप, जैसे हमारा जो कोर्स है वो सर की ही गाइडेंस में चल रहा है और आगे भी उनका गाइडेंस आप लोगों को और हम लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट, तो किस चीज के बारे में आज का सेशन है वो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो दैट यू विल गेट द पॉइंट दैट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि किस चीज पर हमारा आज का जो सेशन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो शिवा सर होंगे वो आप लोगों के साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों को डिस्कस कर लेंगे। वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, और नो प्रॉब्लम, अगर स्क्रीन शेयर नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि एज अ बैंकर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बैंकर, अगर मैं बैंकर हूं तो मैं कैसे जेआईबी और सीआईबी की जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए टाइम निकालूं, क्योंकि इट इज द मार्च मंथ एंड जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ेगा और अप्रैल आने वाला होगा, इट इज द ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो रहा होगा। दैट उस टाइम पर बैंकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा टू प्रोवाइड मैक्सिमम टाइम आवर्स इन द ऑफिसेज। सो जब ऑफिस में ज्यादा टाइम देना है तो हाउ विल वी स्टार्ट टू प्रिपेयर। सो मैं शिवा सर को वेलकम करता हूँ ऑलिवबोर्ड चैनल पर एंड मैं शिवा सर से बोलूंगा कि सर अब आप थोड़ा सा गाइड करें स्टूडेंट्स को कि हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम आफ्टर ऑफिस आवर्स। Time management is an art as well as science. Once he followed the both concepts, definitely everything we will achieve. Not only the JAIIB, CIB also. Here, as you told correctly, the March month is busy by the bankers, particularly the annual closing. Year-end results are to be declared. But here, today's environment in the banking is most of the activities are taken care of by the bank system only, IT system. Manual interventions are very, 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 very minimal. In that case, the participants who are appearing for the JIB CIB, the annual closing is not a barrier for them because the returns are generated by the core banking system. The auditors are also verified through the core banking system. Branch banking system. Only the credit officials are busy with the annual closing. Others are not. So that's why it is very easy for them to complete the JAB, even though the annual closing is there. Right, sir. So it is the thing that it is not the barrier. The annual closing is not the barrier. But right now, we get many of the queries from many of the bankers that uh, how can I cover up the four subjects? For example, in the previous pattern of the examination, we have only three papers, right? So, however, we just managed to cover up the syllabus. But right now, we have the four papers, and two of them are totally new for them. So, Okay. if we start preparation from today onward, so can we qualify the examination by May that we are Yes. going to appear in this examination? It Earlier can be. 3 is there, now 4 is there. Yes, sir. All are related to banking only. It is not medicine or engineering. Exactly. That too, it is the day-to-day banking activities all are happening, particularly the subjects. Whatever the subjects mentioned in the syllabus, that is the day-to-day banking only. So once they are involved in this particular day-to-day banking, the four subjects, even five also is not a problem. Why? Because all are related to banking only. Banking law and practice, that is very easy for them. But other three subjects also, they have to spend some additional time and some coaching from reputed institutes. Then automatically to complete that examination is not a problem. Based on my experience, earlier also, I used to give the suggestions to various people
those who are appearing for the CIB or JIB examination. But that is a mindset only, that no fear psychosis. So if time management and planning is there, whatever the time management and planning, take for example, today, what is to be completed in the bank? Jot down on a piece of paper, jot down on a piece of paper, and complete that one in time. By 5 o'clock, everything will be. That is called planner. The planner is Right. very much required. Once the planner is there, both official as well as the personal achievement is possible. So some people they are having the mindset of no, March is a busy. I have to complete the annual closing. I have to recover all these things. Bank, why they have given 10 to 5? Because the 10 to 5, all activities will be completed within dot time. There is no problem. But here, whatever the unnecessary time you are spending, that is to be curtailed. Once you curtail, that practice is to be developed, then it is not a problem to complete the full subjects of a JIB or CIB. राइट सो कैंडिडेट्स सर ने जैसे कि अभी बहुत सारी चीजों को बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ प्लान। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, तो हमें क्या करना होगा कि एक प्लान बना लेना होगा कि वी हैव द 4 सब्जेक्ट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर देम। ओके, उन सब्जेक्ट्स को हमें कैसे कवर अप करना है, एक प्लान वे में हमें काम करना होगा, एक टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं, दैट वी आर हम स्कूल में जिसको यूज करते थे कि हम टाइम टेबल बनाते थे फॉर 2 आवर्स फॉर दिस सब्जेक्ट, 1 आवर फॉर दिस सब्जेक्ट एंड ऑल द एक्टिविटीज उसी टाइम प्लानर के अकॉर्डिंग हमारी होती थी। सो इफ यू गोइंग गो थ्रू दैट, अगर आप स्टार्ट करते हैं वैसे ही, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हमें डरना नहीं है, लाइक जैसे कि सर ने बताया कि आप लोगों के अंदर जो एक फियर है कि हमारा मार्च एंड है, हम कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से इसको बाहर निकालना होगा कि एग्जाम, क्योंकि बैंक ने भी जो 10 to 5 का टाइम बनाया है, जो टाइम स्पैन बनाया है कि आपकी जो बैंकिंग एक्टिविटीज है वो इजिली आपकी कवर हो जाएगी एक दिन में, उन 10 to 5 में। उसके बाद का जो टाइम है वो सारा आप यूज करें, और वो अननेसेसरीली जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर कर्टेल करके यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। सो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही है टू प्लान योर टाइम। इट मींस स्टार्ट इट फ्रॉम द टाइम टेबल। प्लान करेंगे सब्जेक्ट को, आर्ली बेसिस पर आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, देन फर्दर आगे कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। और सर का एक्सपीरियंस ही है ऑलरेडी, ही इज अ गाइड, आपके मेंटोर हैं, हम लोगों के गाइड हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो चीज बता रहे हैं, ही ऑलरेडी इस चीज को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है अपनी लाइफ में, उसके बाद आपको ये उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहे हैं। और जैसे कि सर ने जो बताया, आप उसको फॉलो करते हैं तो श्योर आप बिल्कुल, आपका सिलेक्शन, आपका जो जेआईबी सीआईबी का जो सर्टिफिकेशन है वो होगा ही होगा। तो आपको डरना नहीं है, टाइम मैनेज करना स्टार्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे, और उसको आपको राइट डाउन करके टाइम प्लानिंग करनी है। ओके सर, सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर, द 4 पेपर्स आर देयर, out of them one of the paper is the Indian economy and financial system. Yes. Most of the topics are in this syllabus, that is financial system, that the bankers used to use in banking operations also, but some topics are of core economics. So it will easy to get the topics by the bankers, or it will be the hurdle for the bankers It is to a cover up the syllabus. yes. That is a good point, a good question. Financial system. What is meant by financial system? Financial system means not only the banks. Mutual funds are comes under the financial system. Insurance companies are comes under the financial system. Capital market is comes under the financial system. All are combined or clubbed together is called financial system. Banks is one area in the financial system. Second one, Indian economic problems. Day to day we are facing, or we are listening what problems the India is facing. First one is inflation is increasing. Second one is the balance of payments problem negative is there. Not only that one, external debt is increasing, internal debt is increasing. All these are basic concepts, because here JAIIB, even though the title itself is a financial system or economic development or economic problems is there, if you go through the subject, then being a matured person, being a bankers,
it is not a difficult task for them. So the financial system are linked to the economic system. Economics, that's why the banks are called backbone to the economy. Once the banks are failed, economy will fail. Today, banks are financing to agriculture sector, banks are financing to industry sector, banks are financing to service sectors like educational institutions, hospitals, sector. All are linked. The financial system is linked to the economic system of the country. Take for example, budget is there. Budget is what is meant to be deficit budget, deficit financing. So every year, Madam Nirmala, the finance minister, whoever is there, they are announcing the budget figures. So is it a rocket science? Simple science. How much categorized for a defense, how much, for agriculture, how much, what are the development activities, what are the new initiatives, things are there. If at all they ask, what are the Indian economic problems? Take for example, everybody knows about that one, high poverty, high unemployment, high inflation rate, balance of trade is negative, forex reserves are depleting, GDP growth is not up to the mark. All these are the problems of the economy, Indian economy. Like that, as an individual, we are having some problems. Economy is also some problems. That's why it is called Indian economic problems. Right. Okay, thank you so much, sir. ये it's a very big problem for the bankers. So I think आपने जो सेशन में सर को सुना होगा, तो आपको समझ आ गया कि डे टू डे लाइफ में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, द सेम थिंग इज इन आवर सब्जेक्ट, राइट? ओके, सो इसी के साथ सेशन को हम लोग एंड करना चाहेंगे। थैंक यू शिवा सर फॉर योर प्रीसियस टाइम जो आपने हमें और हमारे कैंडिडेट्स को दिया। आगे भी आई होप हम चाहेंगे कि आपका जो प्रीसियस टाइम है और जो गाइडेंस है वो हमारे कैंडिडेट्स और हम लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो शिवा सर हम लोगों के साथ हैं और हम उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम टू गिव देयर हिज गाइडेंस टू अस एज वेल एज द कैंडिडेट्स आल्सो। थैंक यू सो मच सर, आपने जो इतना प्रीसियस टाइम दिया उसके लिए हमारे ऑलिव बोर्ड के कैंडिडेट्स को और हम लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ आप आगे भी हम लोगों को इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much to Oliveboard, and also I wish you all the participants who are going to appear for the JAIIB CAIIB with the flying colors. Thank you and wish you all the best. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए तो सर हम अभी डिस्कनेक्ट करेंगे, इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं स्टूडेंट्स के साथ अभी शेयर कर लूंगा। थैंक यू सो मच सर। राइट, ओके। इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि हम यहाँ पर सर ने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर ही दिया है, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ कि व्हाट कोर्सेज वी आर राइट नाउ जस्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो जो हमारे कोर्सेज हैं उन कोर्स की यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि सर ने आपको सारी चीजें यहाँ बता ही दी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो वी हैव द 2 न्यू बैचेस दैट हम लोगों ने अलाइंड किए हैं। जेआईबी सिलेक्शन बैच जो कि इंग्लिश मीडियम बैच है और जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच दैट इज द बाइलिंगुअल बैच। तो आप अगर चाहें तो जो बाइलिंगुअल बैच है इसमें, या फिर आप चाहते हैं जो हमारा जेआईबी इंग्लिश मीडियम बैच है, दोनों ही बैचेस में आप एनरोल होना चाहते हैं, एनरोल हो सकते हैं हमारे साथ हमारे कोर्सेज में। और चूंकि अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर्स आर गोइंग ऑन, सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोड यूज करके अप टू 40% ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर। सो जैसे कि इस पूरे सेशन में मैंने ये देखा कि शिवाराम सर जो हमारे मेंटोर हैं, गाइड हैं, उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी जो आपको डाउट्स रहते थे कैंडिडेट्स को कि बैंकर है हम सर कैसे करेंगे, बैंकर है हम सर टाइम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट को कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है ये ऑलरेडी शिवा सर ने आपको बता दिया है। तो मैं आगे भी आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारा सर के साथ में और अपकमिंग सेशंस हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर इन सभी सेशन से जुड़ जाइएगा टाइमली। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन कैंडिडेट्स। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशंस में। तो सेशन जो भी है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस सेशन और अनदर डाउट यू कैन पोस्ट इन योर कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो। हम वहां से आपकी क्वेरीज को क्या करेंगे, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वी विल be there with the new sessions with the Shiva sir, right? Clear? So जुड़े रहिए हमारे साथ, मतलब ऑलिव बोर्ड के साथ।
तो जैसे ही हमारे नए सेशंस होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वाईटी सेशन से मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन।